In today's lecture, we talk about UDD and CFM. It's a very important question in context to your exam because of 10 times, 8 times there will be a question from this topic, from this chapter. Fine. So class, अभी तक हमने TPX and TQX की वैल्यू निकाली है when X and T are integers. Right? But class, what happen if X and T are non-integers? एग्जाम्पल क्लास अगर मुझे 0.5 Q40 की वैल्यू निकालनी है सो क्लास दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस L40.5 डिवाइडेड बाय L40 राइट प्लस L40 की वैल्यू तो एक्चुअल टेबल में गिवन है बट इसकी वैल्यू हमें नहीं गिवन तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फाइन या फिर क्लास हमें निकालना हो 0.5 P40.5 अब इसके लिए भी वही फंडा है दिस इज L41 डिवाइडेड बाय L40.5 and this both these things are what non-integers. So how to solve this problem, this is what we learn in today's topic. Fine class. तो क्लास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग टू मेथड्स बेसिकली वन इज नोन एज कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टालिटी short form is CFM, right? That is uniform distribution of death. Shortcut is UDD. Fine. So class, let's see one by one. These two methods. Basically, these two methods are nothing but these are the assumptions class. With the help of these assumptions, we can solve the problem of non-integers. Fine. So let's do first method. Let's talk about first CFM. Now class, in this method, we have assumption force of mortality is constant
80 are integers. And your exam because of a 10 times. Now class, in today's lecture, we talk about UDD and CFM. It's a very important question in context to your exam because of a 10 between age. In this method, we have assumption force of mortality is constant between age x to x plus 1 year. हम क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक साल की जो एज है उसके लिए हम मान के चल रहे हैं मेरी फोर्स ऑफ मोर्टालिटी कांस्टेंट है. So that is mu x is equivalent to mu for mu x plus t, mu x plus t is equal to mu x for t lie between 0 to 1. Class, remember what is this means? Class 40 से 41 कांस्टेंट है, 41 से 42 भी कांस्टेंट है, बट दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट मे बी डिफरेंट. लाइक मैंने बोला म्यू 40 इज 0.05. सो क्लास ये कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज एंड टाइम. क्लास 41 और 42 के बीच में भी कांस्टेंट है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम म्यू 40. रिमेंबर, तो वेरी इंपॉर्टेंट assumption, you're taking this for only 1 year class. So what is the benefit of this class? If we are taking this assumption, class हमने TPX का फॉर्मूला क्या किया था? अगर फोर्स ऑफ मोर्टालिटी कांस्टेंट है, we can write this as e to power minus mu t. Right? Now class, this e to power minus mu t can be written as e to power minus mu into 1 whole raised to power t. Right? Because we know that x to power mn can be written as x to power m ka whole n. Right? So this is what I have written. अब क्लास t की जगह क्या आ गया? 1 आ गया. तो can I say my tpx can be written as what? 1px whole raised to power t. लिख सकता हूं क्लास. So this is what we get after CFM result. 1 whole raised to power t. Right? Because we know that x to power mn can be written as x to power m ka whole n. Right? So this is what I have written. अब क्लास t की जगह क्या आ गया? 1 आ गया. तो can I say my tpx can be written as what? 1px whole raised to power t. लिख सकता हूं क्लास. So this is what we get after CFM result. Remember, this t must lie between 0 to 1. Fine. In short, CFM is exponential interpolation, you can say that. Fine class? Any problem? So let's see some questions on this.
नो क्लास इसी की एक्सटेंशन देखें, टी क्यू एक्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1p(x) रेज टू पावर t, रिमेंबर, फाइन। सो लेट्स से हमें 0.5 p40 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग ELT15 मेल, फाइन। तो क्लास we can write directly it is 1p40 raised to power 0.5, right? And this we can find using the formula which we have discussed, L41 divided by L40 raised to power 0.5, right? And substitute the values. So class, when you solve this, you get 0.99139. Fine. Class, similarly, if we have to find 1.25 P45 using same say ELT15 मिल, तो क्लास बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की है वो ये है कि दे ऑल्सो राइट, बट क्लास अगर आप ये सोच रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्लास हमारा एक साल का, वेरी इंपॉर्टेंट, टी मस्ट बी लाई बिटवीन 0 to 1 एंड दिस टी इज ग्रेटर देन 1, तो यू कांट यूज दिस सेम रिजल्ट बिकॉज हमारा जो फोर्स ऑफ मोर्टालिटी का अजम्पशन है बच्चे वो एक साल के लिए कांस्टेंट है, राइट? तो क्लास इसके लिए आपको पहले प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लगाना पड़ेगा। तो वी कैन राइट 1p45 इंटू 0.25 p46, राइट क्लास? 1p45 की वैल्यू तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दिस इज L46 डिवाइडेड बाय L45, राइट? नाउ क्लास दिस t इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, तो इसमें आप लिख सकते हैं दिस इज p46 रेज टू पावर 0.25 यूजिंग CFM, फाइन। सो क्लास solve this. So this is L47 divided by L46 raised to power 0.25. Check the values using ELT15 mail and solve this class. तो क्लास assumption को ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आपके आंसर्स क्या आएंगे, गलत आएंगे, फाइन। तो क्लास इफ बोथ, सी अभी हमने क्या देखा, सिर्फ टी वाला पार्ट नॉन इंटीजर था। व्हाट अबाउट दिस, इफ आई से टी माइनस आएंगे, गलत आएंगे, फाइन। तो क्लास इफ बोथ, सी अभी हमने क्या देखा, सिर्फ टी वाला पार्ट नॉन इंटीजर था। व्हाट अबाउट दिस, इफ आई से टी माइनस एस पी एक्स प्लस एस and we are given s and t both lie between 0 to 1, तो हाउ टू सॉल्व दिस वन? तो क्लास इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स लाइफ एज x प्लस एस
will survive till x plus t. अगर आप इसको इसमें प्लस करेंगे तो लेफ्ट विद x plus t. और क्लास इसका इंटीजर पार्ट क्या है? माय इंटीजर इज x, राइट? तो क्लास व्हाट इज दिस? दिस इज spx. And what about this? This is t minus sp x plus s, right? And what about this? This is class tpx, right? So class tpx can be written as spx into t minus sp x plus s, right? Any problem? तो क्लास t माइनस एस पी एक्स प्लस एस को आप क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट टी पी एक्स डिवाइडेड बाय एस पी एक्स, राइट? और क्लास दोनों टी और एस 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं. दैट मीन्स वी कैन अप्लाई अ CFM मेथड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो क्लास न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1p x रेज टू पावर t होल डिवाइडेड बाय 1p x रेज टू पावर s. So this is 1p x raised to power t minus s. Fine class? Any problem? So class, if I say 0.5 p 40.5. तो क्लास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है चेक करो उसी सेम एज में है ना. इट इज 40.5 से 41. So it is lie between 40 to 41 only, right? So apply that formula. What we get? 1p 40 raised to power 0.5. फाइन. और अभी जो हमने आंसर लिखा था वी कैन सिंप्लीफाई. फाइन. अब क्लास सिमिलरली अगर मुझे सेम क्वेश्चन में इस टाइप का हो 2.25 p 40.25. फाइन. यूजिंग लेट अस सपोज AM92 वी हैव टू फाइंड. तो क्लास सबसे पहले इसके लिए नंबर लाइन बनाइए. व्हाट इज द नंबर लाइन सेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स अ लाइफ एज 40.25 will survive till 42.5, राइट? अब बीच में इंटीजर्स क्या हैं? 41 है एंड 42 है, राइट? तो क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स 0.75 p 40.25, right? What is the meaning of this? This means p 41 class. And what about this? This is 0.5 p 42. तो क्लास हमेशा इंटीजर पार्ट देखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फाइन. अब क्लास इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज L42 डिवाइडेड बाय L41. इसमें अभी अगर हम लगाए टाइम 0 और 1 के बीच में आ गया है तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? P42 रेज टू पावर 0.5, राइट? और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम लॉजिक क्लास. 0 और 1 के बीच में लाया कर रहा है 40.25. वी कैन राइट P40. t माइनस एस ऊपर है. t माइनस एस क्या है आपका? जो ये वाला पार्ट है. तो दिस इज माई 0.75 इज t माइनस एस. फाइन क्लास. And we know how to find value of P40 and P42. Clear? Use AM92 table and simplify this class. Fine? Now class, pause the video and try to solve this question yourself first, then we will discuss.
टेबल एंड सिंप्लीफाई के अंदर बहुत ही
कॉमन मिस्टेक है, लोगों को लगता है ये इट्स लाई बिटवीन व्हाट योर टी माइनस एस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो दे राइट P50 रेस टू पावर 0.75, बट दिस इज रॉन्ग रीजन क्लास। इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे, इट इज 50.5 से 0.75 ऐड करेंगे, दिस इज 51.25। सो क्लास कांस्टेंट क्या है हमारा, 50 से 51 कांस्टेंट है और 51 से 52 कांस्टेंट है, राइट। तो हम इसमें डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लगाना पड़ेगा। तो 0.75 p 50.5 विल बी व्हाट, 50.5 से 51, राइट। तो 0.5 p 50.5, राइट, इंटू 51 से 51.25, तो 0.25 p 51, right? Now simplify this class. What do you get? Now you can apply this t minus s logic. So what do you get? P50 raised to power 0.5 and P51 raised to power 0.25. Fine. So we have P50, that is L51 by L50 raised to power 0.5. Fine class. Now substitute the value from this. So आपके पास value दी हुई है ELT15 male. So these are your values for LX. Fine. So substitute the values. L51 will be 93489 divided by L50 93925 raised to power 0.5 divided by fine. Simplify this and get the answer, class. Clear? So class, this is your CFM. Let's talk about UDD. So class, next topic is UDD, that is uniform distribution of death. And class, इसमें assumption क्या है हमारा, that is death is uniformly distributed between age x to x plus 1. तो क्लास अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, that means TPX mu x plus t, it is equivalent to constant qx for t lie between 0 to 1. That is the interpretation of this assumption. Fine. अब क्लास इसका मतलब क्या है, इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लास अगर मैं बोलता हूं इन 1 hour